भारत ने ऐलान किया है कि वो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर गश्त के मामले में चीन के साथ करार पर राजी हो गया है। इसे दोनों देशों के बीच 4 साल से चल रहे सैन्य विवाद को खत्म करने की दिशा में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. समझौते के बाद LAC पर भारत और चीन के सैनिक 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष से पहले की तरह ही फिर से गश्त शुरू करेंगे। ये समझौता भारतीय सैनिकों को देपसोंग और डेमचौक में पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट तक गश्त करने में भी मदद करेगा। As far as the significance on the line of actual control is concerned, last 5 or 4 winters, the troops were deployed in very high altitude and very areas which are very inhospitable. If these agreements are worked out, I think there will be a scope for disengagement and de-escalation, and they will move back from the line of actual control, which during the harsh winters will be a positive development. जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद ही दोनों देशों के बीच विवाद चला रहा था। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई बार बातचीत हुई, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई थी। I think it's a good development. It's a positive development, and I would say it's a product of very patient and very persevering diplomacy. That at various points of time, people almost gave up. You can say, this has happened. So we have always maintained that, on the one hand, we had to obviously do the counter deployments, but side by side, we have been negotiating. We've been negotiating in fact, since September of 2020, when I met my counterpart, Mr. Wangi, in Moscow at that time. So it has been a very patient process, maybe more complicated than it could and should have been, but whatever it is, the fact is, if we are able, as we now have, to reach an understanding regarding patrolling, regarding maintaining the observing the sanctity of the LAC, then I think what it does is it creates a basis that the peace and tranquility which there should be in the border areas, which there was before 2020, hopefully we will be able to come back to that peace and tranquility. एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग एरिया में घुसपैठ की थी। The core issue is that China made some land grabs on Indian territory. And for the relationship to become normal, for India and China to build mutually beneficial cooperation, it's imperative for China to roll back its encroachments. So patrolling arrangements of any kind cannot obscure the real issue. The real issue is Chinese land grabs, and that issue needs to be resolved. विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर हुआ समझौता भारत और चीन के बीच संबंधों को न सिर्फ मजबूत करेगा, बल्कि कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच शानदार चर्चा का भी रास्ता साफ करेगा।